Hello, students. Let us start today's topic money and banking. Under money and banking chapter, I am going to explain control of money supply or credit supply by the central bank. So it has two aspects or two measures, quantitative instruments of money supply and qualitative instruments of money supply. Under quantitative instruments of money supply, there are some ratios: bank rate, open market operations, repo rate, reverse repo rate, cash reserve ratio, and statutory liquidity ratio. So one by one I will explain. So हमने देखना है इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है क्रेडिट सप्लाई के ऊपर। कंट्री में मनी सप्लाई ज्यादा होती है या कम होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन बैंक रेट। बैंक रेट इट इज दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक बट विदाउट एनी कोलैटरल, बिना किसी गारंटी के। कोलैटरल मींस सिक्योरिटी फॉर पर्पस ऑफ लोन्स, विदाउट एनी कोलैटरल। When bank rate is increased, जब आरबीआई अपनी बैंक रेट इंक्रीज करता है तो मार्केट रेट इज आल्सो इंक्रीज। लोगों के लिए भी बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट महंगा मिलता है। सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज। बाजार में जो मशीनरी खरीदने जाएंगे, कैपिटल, प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एवरीथिंग विल इंक्रीज। दिस लोअर द डिमांड फॉर क्रेडिट। अगर मशीनरी महंगी मिलेगी, बनाया हुआ प्रोडक्ट भी महंगा बनेगा, तो बिजनेसमैन विल परचेज लेस, विल lend less money. This lowers the demand for credit. Therefore, supply of money tend to fall. तो बाजार में अपने आप रुपया कम आएगा। जब ब्याज ज्यादा होगा, लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा, देंगे नहीं, दे भी सकते क्योंकि इतनी कमाई नहीं होगी। So they are not able to pay. So they will. In this way, inflation is corrected. So inflation means production of goods and services is less, but prices are high. Prices are high. So when bank rate is decreased, एक साइड में तो हमने बोला when bank rate is increased, और bank rate decrease भी हो सकता है। When bank rate decrease, market rate is also decreased. जब सस्ते रेट के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, so cost of capital decrease, मशीनरी सस्ती हो जाएगी। अगर हमें अच्छी टेक्निक, मॉडर्न टेक्निक की सस्ती मशीनरी मिलेगी, we will purchase more and more production in the market. This increases the demand for the credit. Therefore, supply of money tend to increase. मीन्स जब रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज करेंगे सब कुछ पॉजिटिव होगा, जब रेट ऑफ इंक्रीज बढ़ाएंगे सब कुछ नेगेटिव होगा। नेक्स्ट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन अंडर क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी सप्लाई। ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशन इज दैट ऑपरेशन in which RBI buy and sells the securities on behalf of government. So when by selling the shares by RBI, आप बड़े ध्यान से समझो, by selling the shares of RBI, RBI ने शेयर बेचे, किसको बेचे? लोगों को। लोगों से RBI को क्या मिला? मनी। तो लोगों के पास जो एक्सेस मनी थी वो कम होगी। अगेन समझो, बाय सेलिंग द शेयर्स एंड सिक्योरिटीज बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, लोगों ने शेयर खरीदे और लोगों के पास जो रुपया था वो बैंक को दे दिया, तो देयर इज अ लेस मनी इन द पॉकेट ऑफ द पीपल, सो इट मीन परचेजिंग पावर इज लो। तो व्हाट डज इट इम्पैक्ट? इट्स इम्पैक्ट इन्फ्लेशन कैन बी रिमूव्ड। लोगों के पास रुपया तो है नहीं, उन्होंने अपने फायदे के लिए शेयर खरीदे। ऑन द सेम हैंड, बाय परचेजिंग शेयर्स फ्रॉम द मार्केट,
जब मार्केट से शेयर खरीदे सो इट इम्पैक्ट, जब शेयर खरीदे लोगों के पास रुपया आया, इन्फ्लेशन इज रिमूव। सो बड़े ध्यान से जब शेयर खरीदेगा आरबीआई, आरबीआई शेयर खरीदेगा तो लोगों के पास रुपया आएगा, दैट विल स्प्रेड इनटू द मार्केट। नाउ रेपो रेट, the rate at which RBI offered short period loans to commercial bank. So rise in repo rate and fall in repo rate. Rise in repo rate in the same way. Rise in repo rate, market rate increase, cost of capital increase, lowers the rate. So you can write all this over here. Then reverse repo rate. The rate at which RBI accepts deposit from commercial banks through government securities. Now try to understand reverse repo rate. RBI कमर्शियल बैंक से रुपया लेता है, कभी कमर्शियल बैंक ऐसा हो सकता है कि उनके पास मनी तो है but no people are not ready to take the loans. So when reverse repo rate is increased, supply is decreased, so it will result inflation is controlled. When reverse repo rate is decreased, supply also increases. जब रिवर्स रेपो डिक्रीज हुई तो सप्लाई इंक्रीज होगी, क्योंकि बैंक आरबीआई के पास रुपया नहीं रखेंगे अपना, क्योंकि उनको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। सो सिमिलरली इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन कैन बी कंट्रोल्ड। नाउ कैश रिजर्व रेशियो, हमने पहले काफी क्वेश्चन किया है, वर्किंग प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन कुछ क्वेश्चन किए। सो CRR इज इक्वल टू, सो इट refers to minimum percentage of bank total deposit to keep with RBI. Higher the CRR, lower the credit creation, so inflation can be controlled. Lower the CRR, higher the credit creation, deflation can be controlled. And at the end, SLR, statutory liquidity ratio. Every bank is required to maintain a fixed percentage of its asset in the form of liquid asset. अब liquid asset cash, gold and unencumbered securities, जब मर्जी बेचे हमें रुपया मिल जाए, कैश तो कैश है, gold anytime you can sell, pure gold anytime you can sell and get the money. Similarly approved securities. So here also a rise in SLR, fall in fund. जब SLR की परसेंटेज बढ़ेगी तो लोगों के पास fall in fund होगा, तो fall in money supply, so capital, so inflation is controlled. Similarly a fall in SLR, पहले rise in SLR था, fall in SLR, rise in funds, जब percentage is less तो rise in funds, increase in money supply, so deflation is controlled. So in question में हमने क्या किया, rise and fall. राइज का क्या इम्पैक्ट आया, हमने ये ध्यान से देखना है, जब मनी लोगों के पास है तो इन्फ्लेशन होगी, जब मनी कम है तो डिफ्लेशन होगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी। सो वेरी इंपॉर्टेंट दिस क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो not students, this is the end. I will take the next topic, that is the qualitative aspect of instrument supply in the next video, or try to understand, and please share, like and subscribe so that I will put more video. If you find comfortable, this is the best way to teach. I will put next more videos. So thank you very much.